H T T, but it is a sample space of a random experiment. सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट और यहाँ पे 0 1 2 3 जो है इट इज अ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अच्छा दोनों में क्या डिफरेंस है? तो दोनों में ये डिफरेंस है कि इन द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट वी गेट द इवेंट्स, we get the events like H H H T T H T T. Whereas when you talk about the sample space of a random variable, so in that case you get the values like 0, 1, 2, 3, and so on. And now when we talk about the types of random variable, तो वहाँ पे तुम लोग बड़ा चार्ट देख सकते हो अपना. You can see the chart, and in the chart you can see that ये जो term है random variable, but it is being classified in two types. One which is called to be as continuous, and other is called to be as discrete random variable. They are of the two types. One which is called to be as continuous, and other which has been called to be as discrete continuous and discrete continuous and discrete. अब ये नाम देखने के बाद तुम लोग को पता होना चाहिए कि what is the meaning of the term continuous is and what is the meaning of the term discrete is. नाम बड़ा जाना पहचाना लग रहा है, राइट? नाम जो है वो सब लोग को बड़ा जाना पहचाना लग रहा है. हम लोग को फर्स्ट टॉपिक में मैंने पढ़ाया था. अच्छा, जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन हुए वो ये सब पॉइंट्स कहीं पे नोट करें. है कि नहीं? कहीं पे नोट करें कि continuous random variable means what? A variable which can take any of the values. A variable which can take any of the values even in the decimal point. Even in the decimal point also. So it is called to be as continuous random variable. It is called to be as continuous random variable. But when we talk about the term discrete means a variable which can take only integral values. A variable which can take only integral values. Integral means it is a complete value. Integral means it is a complete values. That type of variable it is called to be as discrete random variable. It is called to be as discrete random variable. Now you people might be thinking that कि सर आप हम लोग को इतना सब डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो? What is the reason for that is? The reason for that is in the second half part of the chapter, now we are going to learn how to find the probability
of a random variable. How to find the probability of a random variable. क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है बेटा तुम लोग को? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है तुम लोग को? Whereas but in the first half part of the chapter, you have learned how to find the probability of an event, in which but you have learned how to find P of A, how to find P of B, how to find P of A union B, P of A intersection B, P of A under B. सीखा था कि नहीं सीखा था? But now in the second half part of the chapter, your aim will be to find P of x, which is equal to x, which is equal to P of x is equal to question mark. Last year, math students, they might be remembering that. While solving with the sums, शायद तुम लोग ने यही नोटेशन बड़ा यूज किया था, P of x is equal to x, which is equal to P of x. यह तो हो सकता है बड़ा शायद कूपर सर ने वहां पे R यूज किया होगा, P of x is equal to R, which is equal to बड़ा P of R. I don't know exactly बड़ा क्या यूज हुआ था, बट ये नोटेशन बड़ा तुम लोग ने 12th स्टैंडर्ड में यूज किया हुआ है, if I am not wrong. Am I right, Rishabh? बड़ा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है बड़ा, तो भी स्टूडेंट लोग को बड़ा ये डिफरेंस पता नहीं चलता है बड़ा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बड़ा अ कैपिटल X एंड अ स्मॉल x. Around 90% of the students they think that the capital X and the बड़ा small x they are exactly बड़ा one or the same, जबकि बड़ा ऐसा नहीं है. Capital X, it represents a random variable, whereas the small x, it represents the values of a random variable. The values of a random variable. अब यहाँ पे बड़ा मैं एग्जांपल वही लूंगा 2 points वाला. When 2 points बड़ा are tossed, in which the sample space is H H, H T, T H, T T, and X represents the number of heads. In that case, the values which are been taken by X are 0, 1, 2. तो मोस्ट प्रॉब्ली बड़ा ये आउटकम्स तो तुम लोग ने मुझे बताए थे सब, which is the outcome बड़ा which represents no heads. तो तुम लोग ने बड़ा मुझे मैसेज करके बताया था कि सर इट इज टी टी. अच्छा, which is the outcome बड़ा which represents one head. So it is बड़ा एच टी एंड टी एच. And which is the outcome बड़ा which represents two heads. So it is एच एच. अब यहाँ पे बड़ा जो मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड किया है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो मुझे मिले थे बड़ा वो कितने थे बताओ? When the 2 coins when they are being tossed, मुझे सब लोग बड़ा प्लीज मैसेज करो फटाफट, डोंट वेस्ट द टाइम. कुंज, देवाशीष, तुम लोग बड़ा क्या कर रहे हो? मैसेज करो बड़ा फटाफट. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे बड़ा? 4.
बट उसमें से बड़ा फेवरेबल तो मेरा एक ही था ना, टीटी। तो प्रोबेबिलिटी जो मुझे मिला बड़े, वो प्रोबेबिलिटी मुझे मिला 1/4। अब यहाँ पे भी ये देखो, ये देखो यहाँ पे जो लॉजिक यूज हुआ है बड़ा वो सेम ही है। इट इज बड़ा एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस हो, एन ऑफ ए बाय बड़ा एन ऑफ एस। बट बड़ा ये हम लोग कहीं पे लिखते नहीं है बड़ा, वी डोंट राइट दिस। अब ये देखो बड़ा, सिमिलरली सेकंड के लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर बड़ा 4, बट उसमें से बड़ा फेवरेबल जो है बड़ा वो कितना है, 2। तो इसका जो बड़ा प्रोबेबिलिटी तुम्हें मिलेगा बड़ा, वो प्रोबेबिलिटी बड़ा 2/4 होगा बड़ा। 2/4 मिला, इसका मतलब बड़ा आंसर रेड्यूसिबल है, आंसर विल बी बड़ा 1/4। एंड सिमिलरली बड़ा फॉर x इज इक्वल टू 2, मुझे उसका बड़ा प्रोबेबिलिटी मिला 1/4। चल बड़ा, अब तुम लोग मुझे बताओ, और 3 कॉइन्स बड़ा क्या होता है? चलो 3 कॉइन्स के लिए तुम लोग मुझे बताओ बड़ा, सैंपल स्पेस तो तुम्हें पता ही है। x would take the value 0 1 2 3, यहाँ पे आता बड़ा इवेंट, it would be p of x is equal to x, which is equal to p of x। चलो बड़ा स्टार्टिंग फ्रॉम यू बड़ा, x is equal to 0, चलो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? देयर वुड बी बड़ा नो हैंड्स। p of x is equal to 0, which is equal to p of 0, which would be equal to 1/8। very good बड़ू। और x is equal to 1, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बड़ा कितने होते हैं? 3। टोटल आउटकम्स 8। तो इसका जो आंसर आता है बड़ा, तो आंसर बड़ा इट वुड बी इक्वल टू 3/8, और x is equal to 3। The answer would be equal to 1/8।
तुम लोग बड़ा हर एक का आंसर चेक कर सकते हो, हर एक का आंसर तुम्हें 0 और 1 के बीच में मिलेगा। हर एक का आंसर तुम्हें 0 और 1 के बीच में ही मिलेगा आंसर। After completing the first term, which is called to be as random variable. Now we are starting with the next term, which is called to be as a probability distribution. बहुत पहले तुम लोग को अगर याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, याद है? Yes, we have studied about the frequency distribution, and now we are going to study about the term which is called to be as the probability distribution. So in that case, we should know what is the probability distribution is. When all the values, when all the values, पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। of a random variable are represented along with its corresponding probability are represented along with its corresponding probabilities. Then such type of distribution it is being called to be as probability distribution. And such type of distribution is called to be as probability distribution. तो इसका मतलब on one side there will be a random variable, and on the other side there will be its corresponding probability. अब यहाँ पे frequency नहीं होगा, f नहीं होगा, f. There will be the probability that is a p. In the table you can see that on one side there is a random variable x, and on the other side there is a corresponding probability p. X is a random variable which takes the values like x1, x2, x3, dot dot dot. It goes up to xn, and with the corresponding probabilities, that is p1, p2, p3, dot 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 till pn. Achha, what is the difference in the frequency distribution and of probability distribution? कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा f हुआ करता था, जबकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ p. सेकेंड डिफरेंस इज कि हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लास्ट में सबका टोटल फाइंड करते थे, याद है?
और वो टोटल बेटा हम लोग हमेशा किसका फाइंड करते थे बताओ? करेक्ट बेटा, वो टोटल बेटा हमेशा हम लोग बेटा फाइंड करते थे फ्रीक्वेंसी का। And that total of frequency, it was been denoted by using summation of f. It was been denoted by using summation of मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है बेटा तुम लोग को? तो तुम लोग यहाँ पे ये सोच रहे हो कि तो सर हम लोग को मीन्स यहाँ पे क्यों टोटल नहीं किया? यहाँ पे बड़ा टोटल इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका टोटल बड़ा मुझे पहले से पता है। आई नो व्हाट इज द टोटल। कोई बता सकता है कि व्हाट विल बी द सम, व्हाट विल बी द टोटल ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज? वेरी गुड बेटा, ऑल ऑफ यू परफेक्ट। यस वेरी गुड बेटा, परफेक्ट। दैट टोटल इज 1। एंड इन केस तो भी तुम्हें ऐसा डाउट लगे बेटा कि नहीं सर अब हम लोग को प्रूफ करके बताओ, तो ये देखो तुम्हारे सामने बेटा टेबल दिया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तुम लोग बेटा सब लोग सामने से बेटा इवेंट वाला जो कॉलम है बेटा वो अपना हाइड कर दो बेटा। और यहाँ पे ये चेक करो, ये देखो you can see that all the values of x they have been represented along with the probabilities. Therefore it is an example of probability distribution. अब यहाँ पे बड़ा ये जितने भी probabilities है, चलो बड़ा फाइंड करो सबका टोटल। 1/4 प्लस बड़ा 2/4 प्लस बड़ा 1/4, बताओ क्या आंसर है उसका? Denominators बड़ा are same. Yes, very good बड़ा, perfect। अच्छा अब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो सर का एग्जाम्पल था इसलिए आंसर बनाया। भाई तुम्हारा एग्जाम्पल लो जो तुम लोग ने बड़ा मुझे खुद सॉल्व किया था 3 कॉइंस वाला। ले बड़ा कर, टोटल कर, तुम्हारा एग्जाम्पल ले, सॉल्व कर तुम्हारा एग्जाम्पल ले। 1/8 प्लस बटा 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8। इसका जो टोटल है बड़ा चेक करो, आंसर आएगा नहीं बड़ा 1। चलो वेरी गुड। And now we are going to study about the types. After knowing that, what is the meaning of the term probability distribution, madam? Now we are going to study about the types of probability distribution. Types of probability distribution, madam. So here, but in this chapter,
we are going to study about the two types of probability distribution and two types of probability distribution which we are going to study. They are number one, which is called to be as probability mass function, and number two, which is being called to be as probability density function. One is a PMF and other one is PDF. One is the probability mass function and other one is the probability density function. Here you go. Probability mass function but it is denoted by, or it is in the short but written by PMF. Probability density function, it is been denoted by using PDF. So let me start with the very first term which is called to be as probability mass function. Probability mass function. So when we talk about the term mass function, so what is a mass function means? In a given probability distribution, when a random variable, when a random variable, when it takes a complete values means integral values, then such type of probability distribution, it is being called to be as probability mass function. It is being called to be as probability mass function. तो तुम लोग को यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि ना probability mass function जो random variable होगा ना random variable it will take only a complete values और it will take only a integral values. इसका मतलब definitely it will be a discrete random variable. Discrete random variable क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तुम लोग को? When a discrete random variable, when it will be represented along with its probability, so it will be called to be as a probability mass function. तो probability density function क्या होगा? When a continuous random variable, I repeat when a continuous random variable, when it will be represented, along with its probability, it will be called to be as a probability density function. It will be called to be as a probability density function. अब ये जो एग्जांपल तुम लोग दिख रहे हो ऊपर, ये देखो ये टेबल वाला है. फिर से तुम लोग इवेंट का जो कॉलम है वो हाइड कर दो तो तुम्हें क्या दिखाई देगा कि x is a variable which is taking the values like 0, 1 and 2. 0, 1, 2, tell me it is an example of continuous के discrete. चलो फटाफट मैसेज करो मुझे. Correct. It is an example of a discrete. And since a discrete random variable, it is been represented along with its probability. तो चलो बच्चा लोग मुझे बताओ this given example it belongs to. Very good perfect, very good, perfect. अच्छा तुम लोग का एग्जांपल तुम लोग को याद है तुम लोग ने मुझे 3 कॉइंस वाला एग्जांपल बताया था. वो एग्जांपल किसका था
वेरी गुड, परफेक्ट। वो एग्जांपल भी बड़ा वेरी गुड, वेरी गुड। पीएमएफ का था, परफेक्ट बड़ा, वेरी गुड। अब ये देखो बड़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ मास फंक्शन बड़ा मार्क करो, इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, जीरो इज बड़ा लेस और इक्वल टू पी ऑफ एक्स, एंड बड़ा पी ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल टू वन, विच इज ऑलवेज अ ट्रू। ये तो बड़ा एग्जैक्टली कुछ याद आ रहा है तुम लोग को? मैंने प्रोबेबिलिटी में बड़ा फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर में यही पॉइंट पढ़ाया था। बट बड़ा दोनों में डिफरेंस था, वहां पे बड़ा पी ऑफ ए था और यहाँ पे बड़ा पी ऑफ एक्स है। तो भाई उससे क्या फर्क पड़ता है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? देख ले भाई, सुन ले मेरी बात, कि तुम लोग बड़ा प्रोबेबिलिटी जो है ना बड़ा, किसी का भी फाइंड करो, वेदर इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बड़ा, और बड़ा इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ और रैंडम वेरिएबल बड़ा। भाई किसी का भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर, किसी का भी प्रोबेबिलिटी, आखिर में प्रोबेबिलिटी होता है रे। मैं क्या बोला सबको समझो? प्रोबेबिलिटी आखिर में प्रोबेबिलिटी होता है रे। वो प्रोबेबिलिटी बड़ा कभी भी वन से ग्रेटर बड़ा, या तो फिर बड़ा कभी भी लेस देन जीरो नहीं हो सकता। एंड दूसरी बात बड़ा, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स बड़ा, आंसर विल बी ऑलवेज इक्वल टू वन, दैट इज द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज बड़ा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू वन। ये अभी अभी बड़ा थोड़े टाइम पहले मैंने तुम लोग को पूरा प्रूफ करके मैंने बताया तुम लोग को। अच्छा, डेंसिटी फंक्शन क्या होता है सब लोग को पता चल गया मैडम? in a given probability with a distribution, when a random variable takes any of the values, even in the decimal, even in the decimal, then such type of probability distribution, it is called to be as a probability density function. It's called to be as probability density function. इसका मतलब when a continuous random variable, when it is represented along with its probability, it is called to be as probability density function. चलो रेडी हो सब लोग? और उसके बाद बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मास फंक्शन and the properties of density function, then the properties of mass function and density function, they are the similar, खाली the way of expressing the properties they are different. देख उसका प्रॉपर्टी देख कैसा है। बेटा क्या तुम लोग को यहाँ पे सांप जैसा चिन्ह दिख रहा है बेटा? ये सांप जैसे चिन्ह को बेटा हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल। बेटा क्या बोलते हैं हम लोग उसे? इंटीग्रल। तो इट इज इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बेटा इज इक्वल टू वन। और ये जो सांप जैसा चिन्ह है बेटा, उसको भी बेटा, उसका मतलब जो है बेटा वो भी बेटा यहाँ पे समेशन है। मेरे जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स बेटा उनको ये बराबर समझ में आता होगा क्योंकि मैथ्स में बेटा हम लोग ने ये पढ़ा था। राइट बेटा, इट इज अ सम। वेरी गुड बेटा। मेजर जो सिलेबस है बेटा वो अपना मास फंक्शन के ऊपर ही है बेटा, है ना? तो यू विल हैव टू फोकस मोर बेटा ओवर द मास फंक्शन। तो हियर बेटा टुडे वी कंप्लीट, मींस वी हैव कंप्लीटेड बेटा a random variable, types of random variable, probability distribution बेटा, and the types of probability distribution। 12th में तुम लोग ने पढ़ा था ना बेटा ये सब?
सावियो पूछ। बाकी सब लोग बड़े रिवाइज कर लो, बड़े कोई डाउट है तो मुझे पूछो प्लीज। क्लाउस बाउंड्रीज जो है ना बड़ा, वो खास करके बड़ा तुम लोग को जो कंटिन्यूस टाइप ऑफ क्लास इंटरवल्स होते हैं ना बड़ा, उसमें बाउंड्रीज मिलते हैं। और जो लिमिट्स जो होते हैं ना बड़ा, लिमिट्स वो जो डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा जो होता है ना बड़ा, उसके लिए होता है। ये डिफरेंस हो रहा है। और कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स हो रहा है, जो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट जो होता है ना बड़ा, उसको हम लोग लोअर क्लास बाउंड्रीज एंड बड़ा अपर क्लास बाउंड्रीज बोलते हैं। बट अब मेरा ये नहीं होगा, मेरा टेस्ट अभी मैंने बहुत ले लिया बेटा टेस्ट। अब ये प्रोबेबिलिटी बड़ा कंप्लीट होगा ना, उसके बाद मैं लूंगा टेस्ट। या तो फिर डिसास्टर को इसका ये बोलो बड़ा। अच्छा एक काम करो, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का टेस्ट नहीं हुआ है बड़ा, एक मिनट वेट। कोरिलेशन रिग्रेशन का टॉपिक बड़ा प्रिपेयर करो, चलो एक काम करो। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का टेस्ट कुबर सर ने पढ़ाया था बड़ा, राइट। बट टेस्ट नहीं हुआ है बड़ा, उसका टेस्ट मैं रखता हूँ। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन सब लोग सुन रहे बड़ा, सब लोग। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन उसका टेस्ट रखूंगा बड़ा, है ना, क्योंकि वो टॉपिक बड़ा सर ने पढ़ाया था, टेस्ट हुआ नहीं है। तो कल के लिए चलो तुम लोग उसका प्रिपरेशन करोगे। अच्छा उत्कर्षा, बड़ा अपना मैथ्स में मैंने डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन दोनों कंप्लीट कर दिया ना पूरा, ये फाउंडेशन। ओके बेटा चलो ओके। अब नेक्स्ट उसमें ना बड़ा, सब लोग बड़ा डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन बड़ा प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, उसका मैं टेस्ट रखूंगा, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन होगा। नेक्स्ट जो होगा बड़ा कल के लिए कोरिलेशन रिग्रेशन, और उसके बाद बड़ा अपना डेरिवेटिव्स। हाँ तो तुम लोग बड़ा अपियर मत करना, न्यू स्टूडेंट्स बड़ा अपियर मत करना, जो न्यू ज्वाइनिंग हुए ना बड़ा, वो लोग बड़ा मत करना। चलो बड़ा बाय ऑल ऑफ यू।